This is Shrija on Bolly 92.3 FM. I have with me a very special guest who's coming to the San Francisco Bay Area, and that is on Saturday, July 11th at the Oakland Arena is where you can catch Vishal Mishra live in concert. Now, all of us know Vishal Mishra. He's a singer, songwriter. He's composed so many hit songs. I can name so many, but there are too many to list, and he's sung so many songs. Again, too many to list. लेकिन कुछ गानों के बारे में हम बात भी करेंगे, लेकिन पहले फिर बता दूं, Saturday, July 11th, 8:30 p.m. onwards at the Oakland Arena. That's where you should be. This is going to be a big concert with some big songs, beautiful songs. Buy your tickets at ticketmaster.com or sulekha.com. And also check out our website for info, bolly923fm.com. And here is Vishal talking to us. Vishal, hello and welcome. Hi to you and all the people that are listening to this one. I cannot believe I'm hearing that voice we have heard in so many romantic songs. And, and it is so great to have you talk to us. And thank you for doing this. I know Thank you. आप इस टाइम कुछ ड्राइविंग करते हुए, आई मीन आप नहीं ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन ऑन द हाईवे हमने आपको कैच किया है. जब भी मिले, वी आर जस्ट हैप्पी अबाउट दैट. सो आई एम क्विकली गोइंग टू आस्क यू, विशाल, बिफोर वी लूज Yeah. यू, tell us about this tour. You're coming to the Bay Area. The Bay Area concert specifically. Tell us, आपके fans यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, क्या expect कर सकते हैं? It is going to be a very memorable concert. I can tell you that. और उन्हें ऐसा लगेगा कि वो जितनी देर हम गा रहे होंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि वो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान से दूर. और देश की खुशबू लेके आ रहा हूँ मैं. I'm getting the essence of soul and India to this concert, and specifically for Bay Area. We have a very wonderful set that has been prepared by the musicians. I'm really excited to meet the fans, and the whole quest is to find people like me through my music. And once the concert happens, I can't wait to see the light in their eyes. So I'm really excited about that. Oh, and we are so excited as well. Now, Vishal, हमें मजा बहुत आ रहा है. क्यों मजा आ रहा है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन आपका गाना जो है हम उस पे अटके हैं जरा. फ्रॉम द मूवी बंदर, तुम हो तो, फ्रॉम सैयारा. रोमांटिक गाने इतने सारे हैं, और रोमांटिक गानों में आपकी आवाज और थोड़ी सी ज्यादा रोमांटिक लगती है. लिरिक्स अपने आप में काम कर जाती है, बट आपकी आवाज में कुछ जादू सा है. एंड आपके फैंस भी आपको ये कहते होंगे और रिक्वेस्ट भी करते होंगे इस तरह के गाने. बट आई वांट टू आस्क यू, यहाँ पे जब आप आएंगे, किस तरह के गाने मोस्टली सुनने को मिलेंगे, और क्या आपकी अपनी कोई प्रेफरेंस है? डू यू प्रेफर टू सिंग वन काइंड ऑफ और वन जॉनर मोर देन अदर और एनी अदर? No, that's not true. कलाकार का काम पानी होना है. पानी में कोई भी रंग मिला दे, उस रंग का पानी हो जाता है. क्या बात है. So it's like water, and that's what I am bringing to Bay Area. Or moreover, all the concerts that we are doing, it's unique because everything happens from the heart. And when you do something, आप दिल से कोई चीज करें तो दिलों तक लगती है. इसी वजह से फैंस का पैशन है, इसी वजह से फैंस का प्यार है. और अपनी कहानियां आप गूंजते हैं जब आप गाने सुनते हैं. और फिर जब आपको आपके समक्ष, आपके सामने, when the performer is right in front of you, those stories come to life. So I'm just coming there to bring those stories to life, whether it's an emotional track, whether it's a dance track, whether it's a track of happiness or sadness, everything. It'll be like a rainbow. It'll be like a bouquet of emotions that will help people find an expression to the confusion that they have in their mind. Oh, wow, that's beautiful. So a little bit of everything, and lots of love and lots of, जैसे आपने कहा, soul लेके आ रहे हैं. And सिर्फ बे एरिया में नहीं, में ही नहीं. I know that this is a big tour for you. You're touring a number of cities, correct? Yes, that's true. That's true. This is my first ever North America tour, and I'm so excited that I will get to perform in the Bay Area as well. Such an iconic arena and such an iconic place with such a Yes. beautiful diaspora of Indian people. So I'm superbly excited about that. No, I'm sure, and I'm sure they will not disappoint you when you are here. Your fans, it's going to be a big gathering. The Oakland Arena is beautiful, and we can't wait to hear your voice resonate in that arena. It's just going to be so magical. And speaking of your voice resonating, Vishal, one of the songs that I want to talk about today is "Ae Jaate Hue Lamhe" from Border. You know, such a beautiful Yes. song. And जब ये गाना आपको ऑफर हुआ, आई मीन एवरीबडी नोस, ये तो एक आइकॉनिक गाना है. जब ये आपको ऑफर हुआ, एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका रिएक्शन क्या था, बिकॉज इट्स सच अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिंग अ क्लासिक लाइक दैट. एंड टू फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल माई लिसनर्स, आई वांट टू से अनु मलिक जी, जिनकी ये कॉम्पोजिशन है ओरिजिनली, उन्होंने विशाल मिश्रा की एक इंटरव्यू में तारीफ की और कहा कि जिस तरह से विशाल ने गाया है, यू नो, इट वाज बियॉन्ड हिज एक्सपेक्टेशंस टू. लेकिन जिस टाइम पे गाना आपके पास आया, आप
आपको उस टाइम क्या लगा था, आपके व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड? बहुत ही आइकॉनिक गाना है जैसा कि आपने कहा, और मुझे बचपन से बहुत पसंद है, और मैं रूप जी को बहुत प्रेम करता हूँ, जिस तरह के खालिस और सच्चे कलाकार हैं वो। और अन्य जी की इतनी खूबसूरत धुन, जावेद साहब की इतनी खूबसूरत लिरिक्स, और मोर ओवर इतनी आइकॉनिक फिल्म है बॉर्डर, जिसमें वो पहली बार जब वो गाना आया था और दोबारा बॉर्डर बन रही थी। ये गाना और संदेश से आते हैं, दोनों गाने जब मेरे पास आए तो आई हैड अ सेंस ऑफ, आई वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस टू गेट टू सिंग विद Sonu Bhaiya in a song that belongs to him, and then to sing a song completely in my own way, which is जाते हुए लम्हो। एंड क्योंकि मुझे ये गाना इतना निजी तौर पर पसंद है, मैंने कोशिश करी कि जो ओरिजिनल है उससे हटके गाऊं। और मिथुन जिन्होंने ये गाने को फिर से बनाया, मैं और मिथुन अक्सर सोचते हैं जब हम कुछ करते हैं कि उसमें अपनी तासीर डालें, अपनी तबीयत को ला लें, ताकि लोगों को एक नयापन उसमें मिले। सो वी वांटेड दैट आइकॉनिक सॉन्ग टू बी एक्सेस्ड बाय द न्यूअर जनरेशन, एंड आई एम सो हैप्पी दैट because of that honesty, because of the effort that we put in it, it reached so many hearts. And I'm going to sing it. I think the Bay Area is going to be the place that will have it, because I don't think so I'm singing it anywhere else. So it will be very exclusive there. Wow. Very exclusive there. Wow, wow. Talk about getting lucky. And so, just that alone should be reason enough for you to come to the concert. Remember, Saturday, July 11th, the Oakland Arena is where you should be, 8:30 p.m. onwards. Vishal Mishra, in his first tour of the United States, will be in concert in the San Francisco Bay Area on that date. Tickets are at ticketmaster.com and sulekha.com. Now, विशाल, इस टूर का नाम पागलपन टूर है, एंड आपकी एल्बम जी पागलपन, ये तो आपके फैंस हम सारे जानते हैं, आई थी अर्लियर दिस ईयर। इस एल्बम को जी, बनाने में आई बिलीव आपको तकरीबन 2 साल लगे, एंड इसको जिस that's true. प्यार से लोगों ने रिसीव किया, आई एम गेसिंग इट मस्ट हैव बीन वर्थ इट, बिग स्पेशली द रिस्पॉन्स टू द सॉन्ग क्या बताऊं तुझे, विच इज लाइक जी. फायर एंड एवरीथिंग। ओ माय गॉड, द वीडियोस एंड I'm acting in the song as well, yeah. yes, you're acting in the song. And even the launch, from what I understand, the launch was also pretty historic. The live listening It party was. streamed from Goa crossed, what, 500,000 views while it was live? It was the biggest Asia stream ever, actually. Yeah, one of the Wow. one of the biggest streams in the world. Yes, Wow. 500,000 live concurrent views on that album launch. It was magic. It was. See, it's all about that. We all have our share of problems, Mhm. and music does nothing. It just gives a language to everything that you want to say but can't. And I am also going through the same thing. That's why I named it Pagalpan, because कितनी सारी चीजें हैं जो हमें पागल बनाती हैं, और हम सभी पागल हैं अपने अपने तरीके से। अगर किसी भी पागलपन को, किसी भी कंफ्यूजन को, किसी भी रेस्टलेसनेस को कोई मेरा गाना आराम दे सके, कोई उसको भाषा दे सके, एक्सप्रेशन दे सके, the whole album is dedicated to that feeling. And I'm so glad that whatever time it took for me to make it, I'm finally able to put it in front of the world. And like the old times, like the artists used to do, make an album and tour with the album. I'm doing it, and my first tour has happened in even before India. We are coming to America to do it, so it's all. I feel very grateful. It's all in the right place, and I hopefully can, when people come to listen to it live, also, because I'm singing a lot of my album songs, they can get the language that I want them to get and get the answers to everything that they want to say, and that is the only goal that I have in my head. Wow, and amazing, the response to the album, and congratulations to you, because this must be very rewarding. And you probably now are already thinking, I need to make another album like this, because this was, I mean, 2 years and all worth it, right? It's just so beautiful. मतलब इतना खूबसूरत होता है क्योंकि मेरी एल्बम बड़ी यूनिक सी है। इसमें बहुत सारे कल्चर्स हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ जी। स्पेनिश स्पीकिंग पीपल, आई हैव अ लॉट ऑफ पोर्चुगीज स्पीकिंग पीपल, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। कोई भी भाषा का अवरोध नहीं है इसमें। There are no hassles, there are no boundaries, there are no set limits. It's a free album, it's an independent album in its own way, and I'm so glad that people are receiving it. And you're right, next one will be out very soon. I've already started working on it, and after I put out all these songs and put out the videos, and I make sure that the song reaches the person that it is supposed to reach, we'll start putting out snippets of the next one as well. It's already happened.
Oh, wow. Okay. Just the news that we wanted to hear. And I want to tell all my listeners, we lost a little bit of Vishal's voice there, although you probably made out what he was saying. And that's because he is talking to us while he's on the road right now. So I do want to thank Vishal again for doing this interview, taking time out to talk to us at Bolly 92.3 FM. So thank you, Vishal. And before we let you go, I have a couple more questions. So one is about, I mean, we just spoke about the album. Yes. It's You are a composer. You are also a singer. In fact, I think composing is what you started with. Is there one that you enjoy more than the other, singing more than composing, or composing more than singing, or both equally? I enjoy music. Anything that comes with it is something that gives me pleasure, and it's all about that. I like creating, and I am pretty aware of the fact that मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा है ईश्वर कर रहा है. So I just surrender to that feeling and I let things flow through me, and I'm a firm believer of that. And I just have to keep the channel clean. I just have to observe the right things. वही छलकता है जो भरता है, तो भरने का काम मेरा है, छलकाने का काम ईश्वर का है. And I just surrender to that, and I enjoy anything that is related to music. एक बाग में आप जब जाते हैं तो खुशबुएं अलग अलग तरह की होती हैं. मैं सारी खुशबुओं को एंजॉय करता हूँ. I'm sitting right in the middle of that garden where all the flowers bloom and they blossom beautifully with fragrances that only belong to them, and I just enjoy all of it. वाह, तो आप सिंगर हैं, कंपोजर हैं एंड लिरिसिस्ट भी हैं, बिकॉज आप जिस तरह से बातें ही करते हैं, द वे यू द वे यू स्ट्रिंग वर्ड्स एंड द वे यू से इट जस्ट साउंड्स लाइक एक और गाना बन गया बैठे बैठे. You never know. I might come to Bay Area and hijack your show for a day for my listeners. You know what, Vishal? Let's do it. I will so gladly just say, okay, Vishal Mishra is going to host the morning show, and this will be. I am telling you, it will smash many records, more than your Pagalpan tour, than the million views. Because hosting a radio show, wow! I'm sure you'll be. We I won't have a job left after that. That's for sure. No, no. The thing is, my visa will expire after that, so you'll have to go back. So your job is intact. But we'll work around. We'll work around doing this show. I'll be very happy to interact with fans, and let's do it the old way. If I at all happen to take some time out, well, I would love to come to your studio. Oh, that is awesome. Yes, I will hold you to that and we will make that happen one of these days. Yes. But now I want to ask you, we were just talking about composing and about you writing songs and composing songs and singing songs. Now, although you had sung songs before, but when Kaise Hua came from Kabir Singh, Mhm. that was Mhm. sensational. And I know all of us were, हम अपना गला फाड़ फाड़ के, हमारे तो गले फट ही जाते हैं वैसे, लेकिन हम फाड़ फाड़ के गा रहे थे कि आपकी तरह गाने की कोशिश करें. कैसे हुआ वो जो आवाज निकल रही थी आपकी, ऐसा लग रहा था कि रूह से जैसे निकलती. इट वाज जस्ट गूज बम्पी काइंड ऑफ. एंड दैट वाज द सॉन्ग Thank you. विथ विच यू अनाउंस दैट you are here, you have arrived. When you look back at your journey, do you ever ask yourself कि कैसे हुआ, इतना सब कुछ हासिल कैसे हो गया? कभी आप सोचते हैं कि आपने जब शुरुआत की थी तो क्या आपके सपने थे और अभी आप कहाँ हैं उस जर्नी में? नहीं, हर वक्त शुक्रिया अदा करता हूँ ईश्वर का. बट ये कोई मंजिल नहीं है. ये हासिल करना, ना हासिल करना, सक्सेस, फेलियर, अराइवल, ये सब लोगों के पीओवीज होते हैं. मेरा काम है, जिस शिद्दत से मैं 20 साल पहले म्यूजिक से मोहब्बत करता हूँ, हर दिन कुछ नया सीखूं, हर दिन और मोहब्बत करूं. कैसे हुआ? जब आया उससे पहले जो मैं एक फिल्म कर रहा था, उसका नाम था नोटबुक. और यस. उस फिल्म में मैंने बहुत दिल से गाने बनाए, बहुत सारी चीजें उसमें, रिश्ते बने, गाने बने. बट सबसे खूबसूरत बात जो हुई मुझे, एक वक्त मैं सोचता था यार कि इतने खूबसूरत गाने बनाने के बावजूद भी इनको वो तरक्की क्यों नहीं मिल रही. पर ईश्वर का कमाल ऐसा होता है, जब आप कोई चीज भरते हैं तो अंततः वो छलक जाती है. So all the hard work that you do eventually pays off, and I think Kaise Hua was just God's way of saying that, good job, son. So it just happened like that, and honestly, I'm not in this race at all. I'm not I'm not chasing any destination. I'm just enjoying and observing this journey, looking outside my window and seeing how life follows and what I feel about people, what they feel. मैं कोशिश करता हूँ मुझे महसूस हो कि लोग सोच क्या रहे हैं और उस पे गाने बनाऊं. और हम सब इतने कॉमन हैं. अब बे एरिया में हो या आप उन्नाव में हो, जहाँ से मैं आता हूँ, उत्तर प्रदेश से, जी. कहीं पर भी हो आप, एक जैसे लोग हैं, एक जैसी परेशानियां. तो अगर आप गानों से उन परेशानियों को बांध दे तो वो आसान हो जाते हैं. वही करना चाहता हूँ बस.
And आपने जो बात कही, I think that is why your songs stand out in a sense because, like you said, you're not in a race, you're just doing it for your love of music. And जब आप गा भी रहे होते हैं या जिस तरह की आपके गाने हैं, कॉम्पोजिशंस हैं, इतने प्यार से बनाई हुई, इतना वक्त लगा के बनाए हुए, एंड विच इज वन ऑफ द रीजंस फॉर व्हाई दे साउंड एज ब्यूटिफुल एज दे डू. अभी तो हमने हिंदी गानों की तो बात की, बट डू यू ऑल्सो प्लान, बिकॉज यहाँ पे बे एरिया में वी हैव गुजराती, तेलुगु ऑडियंसेस एक्सेट्रा, सो उनके लिए भी है ये कॉन्सर्ट. सो एनीथिंग दैट यू वांट टू से टू देम? I have all, you know that my biggest listener base is Telugu listening people because I sing so many Telugu songs. If Yes. people have seen this film called Peddi, Yes, that's my yes. song. Nachu Nachu is my song. So many songs in Telugu. Sahana Sahana from Raja Saab. And all the love that I get from not just Telugu, even Tamil people. We recently did a Malayalam song called Kattu Chambakam. It became one of the biggest Malayalam songs ever. I've done a song in Gujarati. I've done a song in Punjabi recently, which is becoming so famous. So languages are not a problem. I might sing in Spanish also. You never know. It's the boundary is just heart to heart, and I really don't think about languages, and hence I'm able to flow in all the languages because for me they're a way of expression. So जितने भी लोग हैं उतने जो भी वहां पर हैं, तेलुगु हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, कहीं के भी हो, अगर आपको महसूस होता है तो आप हमारे कॉन्सर्ट में आइए. You'll get to see everything, you'll get to hear everything, and it's just a way of meeting people that are like me, and hopefully you'll feel that in all your pains and in all your happiness, you're not alone. There is somebody like you who's gonna sing on the stage. And sometimes you just need that voice, and that voice belongs to Vishal Mishra. So, like you said, and आपने Spanish कहा, आपके album में तो है ही है Spanish, Portuguese. You know, you've done बिल्कुल. some beautiful collabs in your album, Pagalpan. Pagalpan Tour is what it's called. And Spanish में भी जरूर गाइए क्योंकि बे एरिया में यहाँ पे Spanish भी बहुत लोग बोलते हैं, तो इसीलिए that would be just perfect. That Finally, would be nice. Vishal, it has been such a pleasure talking to you. But before we say bye bye to you, I want to say मैं कुछ confusion में हूँ. शायद आप मेरी confusion दूर कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल. कहा, मुझे दो लाइनें रिक्वेस्ट करनी है कि आप हमारे लिसनर्स को सुनाइए. कैसे हुआ कि तुम हो तो कि जाते हुए लम्हे. आप बताइए, आप इसमें से कौन सा गा के सुनाएंगे? मैं बिना बताए सीधा गा देता हूँ. वो बेटर है. ठीक है. हाँ, इन हाथों में जब से है आया ये हाथ तुम्हारा, जैसे दरिया की हलचल को मिल जाए कोई किनारा, तुम्हारे संग आवारगी भी देती है जैसे सुकून, तुम्हारे संग हर एक लम्हा यादें नहीं मैं भूलूं, तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है, तुम हो तो ये लम्हा है, हाँ इसमें ही तो सदा है. Thank you. Wow. I want to tell my listeners this is Vishal Mishra. He's right now in a car and he's being driven to his next destination. And वहां से वो गाते हुए उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया और वहां पे आपने उनको सुना है. आप सोचिए वो इतने मैजिकल लग रहे हैं, तो स्टेज पे वो कैसे लगेंगे when he is at the Oakland Arena. Be there Saturday, July 11th, 8:30 p.m. Oakland Arena, right here in the San Francisco Bay Area. Tickets are at ticketmaster.com and sulekha.com. Also check out our website, bolly923fm.com for details. Vishal Mishra on his first North American tour. This is the Pagalpan tour, and so excited and waiting to see you here live in Can I concert. say something via you to the people that are listening Yes, to yes, please, us? please. I just want to tell all of you, आप लोग हैं तो सब अच्छा है. I make music for all of you, and it would be amazing to see people who have loved all these songs to be there. I'm here for you, and I've brought a little India with me, so be there. I would really, really enjoy seeing all of you, and I can't wait to actually love you with all my songs. So I hope you guys are there at the Oakland Arena. We will be there. Thank you, Vishal, so much for Thank talking to you. us at Bolly 92.3 Thank you, FM. Shreya. Thank you, Shrija.